वो जमात अहमदिया के नज़्म ज़ब्त से बहुत मुतासिर होते हैं और हैरानगी का भी इजहार करते हैं कि कैसे 1 या 2 घंटे के मुख्तसर से वक्त में 40 या 50 हज़ार मेहमानों को बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ खाना पेश किया जाता है। और अभी हम 3D मॉडल के ज़रिए खाने की मार की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि उस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है, खाने की मार की तरफ चला जाए? Jazakallah Mubarak, sir. I think that's a great idea, and we have our 3D model here that allows us to take a closer look. So there we go. There's our 3D model, and I can see Raza off in the distance. Let's zoom straight into the food marquee. Raza is there. He's looking hungry, but he looks ready as well. Raza, what's going on? Looks like there's hundreds of people there. I'm sure you're helping out. I am hungry, but I'm not allowed to eat just yet. But I tell you one thing, Ahmad Saab. Mubarak Saab was talking about the discipline, the nazmos that the guests of the Promised Messiah ﷺ have displayed. And I've been standing here since the queue opened, since the lines opened, and this hall just filled in fantastically without any commotion, without any pushing, no shoving. They came, they slightly took they took their plates and just kept moving on. And as you can see, there's a lot of people here. We have familiar faces here who have swapped sides, and you might know this guy from. This is looking amazing. I love the aromatic smells. You can show all the 3D models you want, but nothing beats being inside the marquee. And let me tell you, it just smells delicious. So that's Salam's puns. Now, you're going to have to come on this side now because we got some work to do. There's so many guests of the Promised Messiah ﷺ who have come here. One of them is joining me today. Hafizab, tell us about yourself very quickly. Yeah, I'm Hafiz Muhammad Hamid Agora from Nigeria, but presently studying in the UK. From Nigeria. Yeah. So tell us about your journey. First time when you came to the Jalsa Salana, the whole setup, how was that feeling for you? Wow, it's so overwhelming for me. I've always dreamed to be here, and I've prayed to God that if I have the chance to be here, I'll be so grateful, and I'm so happy. Just perfect. What we'll be seeing on the TV, and we're able to see it live. I'm so excited. Yeah. Asaf, Jazakallah, thank you so much for your time. I know I'm keeping you between, I'm standing between you and the Dal. Sarib, Jaja is with us on here as well. Sarib, you look after this whole setup. Now, I know there's a lot of things that you have to do, I know. So tell us, wow us with some facts and figures just to make people understand the size of this operation. So we've got 2,600 bottles, and we've included 400 water tables over this whole marquee. This marquee can fit in 5,000 to 6,000 people at any given moment. And we've got roughly 105 to 110 volunteers who work with us across the day to help us out. And on top of that, we've got, last year we were 50, and this year we moved from 50 volunteers to 100 volunteers. So 15,000, or let's say 6,000 people can fit into this. How long does it take for you to serve all of them? 90 minutes to 120 minutes, and 15,000 servings in total. That is impressive. So one of those 15,000 servings is my brother here. He could not resist. All right. I don't think I have to ask. No. But. Yeah. Listen, I'm busy eating, but it is amazing. And I just can't wait. I'm looking at the roti, and I can't wait to just grab one of those as well. Grab a whole pack, take it back for the boys. So that was it from us here in the food marquee. We are going to show you now a short documentary from home to Jalsagah. As you know, there are so many people who undertake a very long, arduous journey from their homes, coming all the way to the Jalsa site here in Hadikatul Mehdi. But at every step, I know you have a long journey as well. Now you got some stains here as well. That's a long journey for you. I mean, although now with all the transportation modes, it looks very comfy and very quick, but it's a long journey, isn't it? It is. It's very arduous, but not just the stresses of traveling, but also, leaving your loved ones behind. And, Allah knows best. Will you see them again or not? But, the intent is there, and the audacity is there, the missing is there. So it's so many different emotions that you're feeling. Not just any journey. It's a journey to the garden of the Mahdi to see their beloved Imam, Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadullah Ta'ala ibn Aziz, to pray behind him, to listen to him, and to act upon the words of Huzur. So let's watch this very short piece that we have prepared for you. Salana
an annual gathering that all Ahmadis look forward to, especially when the beloved Khalifa is present at the gathering. No wonder tens of thousands of Ahmadis from all over the world flock to attend this year's Jalsa Salana UK, including from Indonesia. This is the story of a Mubalik and a father-son duo from Indonesia who intend to attend the 2024 Jalsa Salana UK. For Ahmad Hidayat Sahib from Bogor, this is his first Jalsa Salana UK. It will also be his first time meeting Huzur Anwar in person. While from Bandung, about 200 kilometers from the capital city of Jakarta, Imad Nikmatullah Sahib brought his little son Malaki Irfan Ahmad and his family for their first Jalsa Salana UK. We follow them as they prepare themselves for this blessed gathering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं रहमत हिदायत हूँ. मैं एक मुरब्बी सिलसिला इंडोनेशिया का और इस वक्त बतौर नाइब आमिर दावत इल्लाह खिदमत पर चला रहा हूँ. इसके अलावा भी जामिया में बतौर टीचर हज़रत मसीह मौद की तफसीर पढ़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह इमसा जैसा साना यूके शामिल करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह शामिल करूँगा. Assalamualaikum, nama saya Imad Nikmatullah, asal dari Bandung, Indonesia. Saya hobi main sepeda, lari, renang. Di samping saya ada anak saya, namanya siapa, Dek? Malaki Irfan Ahmad. Kelas berapa sekolah? 5. Kelas 5. Hobi apa, Dek? Memasak. Ini apa nih? Rubik. Ini hobi bukan? Hobi juga nggak? Hobi juga. Nah, sekarang mau kemana kita, Den? Ke UK. Mau ngapain? Gak usah. Dia ikut jalsa ya? Oh, iya. जैसा सालाना यूके में शामिल करना तो ये बहुत मेरी पुरानी ख्वाहिश है कि और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला करे कि किसी दिन में जैसा सालाना यूके में शामिल करने की तौफीक पाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इमसा जैसा सालाना यूके में शामिल करने की तौफीक खुदा ताला ने अता फरमाई है. और ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआएं के जैसा सालाना के दौरान मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने का मौका मिल जाए और ख़ास तौर पर हुज़ूर अनवर से भी मेरी मुलाकात हो जाए. ये मेरी बहुत दुआएं और मेरी बड़ी ख्वाहिश हैं. अल्लाह ताला मुझे इसके तौफीक अता फरमाए. Nah, ini pakaian dan peralatan yang akan dibawa ke Jalsa UK. Ada baju, tentu batik juga ciri khas orang Indonesia. Alat mandi, kaos kaki. Nah, ini mainan si Ade. Ini boot cover sama jas hujan karena katanya di sana itu London itu UK itu negara yang cuacanya paling gak jelas katanya. Bisa kapan aja hujan, kemudian bisa kapan panas. Nah, Jalsa UK ini kapan kita memutuskan untuk ikut? Sebetulnya yang paling utama adalah alasan keuangan ya. Di perjalanannya ada
kondisi keuangan yang cukup menguntungkan sehingga akhirnya oke, kita harus berangkat gitu. Dan salah satu proses pengurusan yang cukup sulit jasa UK ini adalah visa, pengurusan visa. Tapi selama itu semua prosedur kita tempuh dengan baik, insya Allah akan berhasil visa keluar. Dan alhamdulillah visa keluar semuanya. Dan itu juga yang membuat kita senang banget ya deh. Setelah menunggu 2 minggu lah. Setelah pengajuan visa, akhirnya visa keluar setelah 2 minggu. ये मेरा पहला जासा है यूके का इंशाअल्लाह इंसा जैसा साना यूके में शामिल करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे वीज़ा मिल गया है और पिछले साल लेट से वीज़ा देर से वीज़ा आया था तो मुझे जाने की तौफीक नहीं मिली तो इंसा जैसा साना यूके में इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूँ शामिल कर रहा हूँ इंशाअल्लाह Paspor dek, lupa dek, tolong ambil di sana tuh. Nah, ini paspor kita orang Indonesia paspornya hijau. Nah, setelah visa keluar, tentu itu juga harus segera kita berburu tiket. Nah, akhirnya kita juga lakukan itu, dan alhamdulillah sudah dapat tiket yang murah dan ya senangnya nggak bisa digambarkan ya deh ya. Setelah alhamdulillah visa lancar, ya kemudian juga dapat tiket dengan harga yang masuk lah. Jadi kita jadi pergi ya dek. Sip. Nah, ini sebetulnya jasa UK yang kedua buat saya. 2018 saya pernah यूके में मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है वैसा तो ज़्यादा रिश्तेदार नहीं लेकिन निस्बती तो है वो अहलिया की तरफ से तो कोई है रिश्तेदार वहाँ पे इनकी जो 2 बहनें हैं वहाँ लंदन में रहती हैं शायद इंशाअल्लाह उनसे भी मुलाकात होगी hati-hati. Ya. Tangga boy hati-hati. Nah, di UK itu sebetulnya kalau saudara sih nggak ada. Tapi karena kita orang jemaat ya jelas saudara rohani pasti ada. Nah, salah satunya ada Hudam Bandung lagi sekolah kuliah di sana. Dan yang pasti Pak Mubalik sih ada. Ya cukup kenal baik, pasti pengen ketemu dengan Pak Mahmud ya di sana. Sip. Apa yang saya harapkan dari jasa UK, tentu karena uzur tinggal di sana, ya pasti yang pertama adalah ingin mulakat atau bertemu dengan uzur. Kemudian juga yang lainnya ya pasti dalam namanya acara jasa internasional, semua saudara-saudara dari berbagai negara kan bakal datang di sana. Ya deh ya, kalau adek pengen ngapain? Ingin bertemu Huzur dan ingin bersenang-senang. Ingin apa? Bertemu Huzur dan bersenang-senang. Bersenang-senang ngapain? Ya liburan mungkin. Sambil liburan. Iya ya. ये तो ज़ाहिरी बात है कि जब अपनी अहलों यहाँ से दूर हो गया तो दिल में कुछ ऐसा एहसास तो पैदा होगा लेकिन ये तो खुदा ताला की खातिर है और जमात की खातिर है तो फिर उसमें कोई इतराज़ नहीं है बेशक कुछ दिनों के लिए अहलो या से दूर हो जाऊंगा लेकिन
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करेगा, इनकी हर ज़रूरियत भी खुदा ताला इंशाअल्लाह फिर देखेगा और पूरा भी करेगा। इसीलिए पूरी तसल्ली के साथ इंशाअल्लाह हुज़ूर से मुलाकात करने जाऊंगा इंशाअल्लाह, और दुआ के साथ, तमाम दुआ के साथ उनके लिए भी जो यहाँ घर में छोड़ूंगा, फिर सफ़र के लिए भी, और ख़ास तौर पर हुज़ूर अनवर के लिए भी। मेरा नाम अजीज़ा ताहिरा है और मैं रहमत हिदायत साहब की अहलिया हूँ। जब मुझे ये पता चला कि मेरे मियाँ जो हैं वो लंदन जलसे में शिरकत कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया, और मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि उनको हजूर से मिलने का मौका मिलेगा। वैसे तो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि मैं और मेरी बेटी भी हजूर से मुलाकात करें, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर ऐसा करेगा कि हम भी हजूर से मुलाकात करें तो उस वक़्त ज़्यादा खुशी होगी। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ अपने मियाँ को कि वो जब वहाँ जाएं जलसे पर सलाम कहें हमारा हजूर को, मेरा भी और मेरी बेटी का भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम हजूर को कहें। Terakhir ketemu Huzur ya waktu mulakat di Jalsah UK tahun 2018. Sebetulnya ada cerita menarik ini. Jadi waktu itu anak saya yang pertama itu yang cewek usia 7 tahun. Sebelum kita berangkat, si anak kanan mimpi ketemu Huzur. Nah, jadi ketika dia tahu ayahnya mau berangkat ke Jalsah, ke UK dan mau ketemu Huzur, anak saya ini terus pesan ke saya, ayah tolong sampaikan Neng mimpi ketemu Huzur. Nah, udah jelas saya dari niat dari rumah juga, ya udah pesan anak saya deh. Saya sampaikan Huzur, saya bilang lurus, saya ada pesan sangat penting nih Huzur, saya bilang. Huzur kan, wah apa itu Huzur? Saya bilang, ini pesan dari anak saya, tolong sampaikan anak saya mimpi ketemu Huzur. Terus diem, semua orang diem, Huzur juga. Terus itu aja. Saya bilang, iya Huzur, itu saja. Jadi itu penting kata Huzur. Semuanya ketawa-ketawa aja. Jadi akhirnya Huzur, yaudah sini. Alhamdulillah saya dikasih pulpen ya dan cindera mata, ini tolong kasihkan ke anak kamu. Jadi, nah di kesempatan ini juga mudah-mudahan nanti ada kita mendapat karunia untuk bisa mulakat dengan Huzur dan bersama anak-anak juga. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum sahabat warta, alhamdulillah kita sudah tiba di Bandara Gatwick di UK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tiba di Masjid Baitul Futuh. Ini adalah tempat menginap kita selama 1 hari. Nanti pada hari Kamis kita akan pindah ke lokasi Jalsah yaitu di Hadikatul Mahdi. Assalamualaikum. Alhamdulillah ini sudah di daerah tempat kami menginap. Ini adalah tempat registrasi. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan registrasi. Sekarang kita menuju ke tempat penginapan. Ikuti saya. Nah, ini tenda Indonesia untuk bapak-bapak. ये रोज कल मुबारक सुबह